ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय हियर। आज कुछ लेट हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा काम ज़्यादा था। पर ठीक है, आज के क्वेश्चन को देखते हैं एंड लेट्स सी विद ऑल द पॉसिबल अप्रोचेस हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ओके, सो लेट्स सी। तो हम अपने वापस से नोटपैड पे आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव बीन गिवन टू array of integers a and b of size n and m. We need the task is to find the pair. Check if a pair exists as that swapping elements of the pair will make the sum of the two arrays equal, right? हमें ये चेक करना है. So if there exists any such pair, return 1, otherwise return -1, right? तो हमें यार क्वेश्चन जब भी पेयर्स है, whenever given pairs, sub arrays, sub strings, sub sequence, the brute force approach is to form all the pairs. This is the brute force approach for these type of question where the substrings, subarrays and subsequences are given. Right? तो अगर हम सारे पेयर्स को फॉर्म करें, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेयर फॉर्म करने के साथ हमसे करवाना क्या चाहता है। तो इट्स बिन गिवन कि आपको स्वैप करना है और सम जो है इक्वल करना है, राइट? स्वैप करके हमारा सम इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि 4 को यहाँ भेज सकते हैं 3 की जगह, और 3 को यहाँ ला सकते हैं, राइट? सिमिलरली इस 4 को भेज दें उधर और 6 को यहाँ ले आएँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ईच एंड एवरी वैल्यू वुड बी स्वैप्ड विद ईच एंड एवरी वैल्यू इन पी एरे, राइट? एंड देन ओनली वी कैन मेक इंश्योर। और हमें सम भी ट्रैक करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक सम वन निकालेंगे, इज नथिंग बट सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे ए। फिर हम एक सम टू निकालेंगे विच इज नथिंग बट सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे बी। And at the position of swapping, what we'll do is that we will have a nested for loop. Have a nested for loop which will go for I equals to 0, I less than n, I plus plus, and we'll have an nested for loop which will for j equals to 0, j less than m, and j plus plus, right? And we will check at any point of time what I want key the element of b comes in a and the element of a comes in b. So let's say ये for loop हमने a को लिखा था, maintain कर लिया, and this for loop is b, right? A of I and b of j. So at any point of time, I have to check if someone plus uh, I need it from b, right? So someone minus a of I, मैं अपने current element को अपने में हटा रहा हूँ, and I am taking b of j, right? ये swapping भी हो जाएगा. Similarly, in S2, I will check that I am again removing my current element, and I'm taking from the array 1. So at any point of time, is if these some matches, then I can say that there is a possible pair that can be swapped and sum could be equal. So I'll just say if someone minus a of I plus e of j equals to S2 minus of j plus a of I, right? Of minus b of j plus a of I. That is the case, I will just say return -1, and at the end of the nested for loop, if that is not the case, I'll just say return. So that would be a brute force technique, right? And what is the time and space I will be needing? So I'm going for nested for loop that is n cross m, right? And seeing the constraint, if you see constraint is 10 power 6, right? So 10 power 6 will give you 10 power 12, which is greater than 10 power 8, and that is why this code will give us DTLE even though our logic and approach is correct, right? So let us code this approach and then we can move ahead, with the optimized one, right? Okay, so this would be our method one. Let me just uncomment my first approach. Let me give you a very quick walkthrough as well. तो हमने एक सबसे पहले we found the sum of elements in A, sum of elements in B. हमने एक बार बस यही चेक किया कि S1 minus A of I plus B of J equals to S2 minus B of J plus A of I. That is the case, return 1, else return -1. क्योंकि हमने देखा था यार ये brute force approach है and that number of iterations was going beyond 10 per 8. So if I submit this solution, we will definitely get a TLE. ठीक है, so as we can see for rest of the cases, almost 40 to 45 cases we got the TLE because 10 per 8 का condition hit हो गया. ठीक है, अब अपने चलते हैं हम मेथड टू अप्रोच पे। तो जब भी कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच होता है यार, तो व्हाट इज़ द ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड ऑन कि हमने मेथड वन में जो रिपीटेड टास्क किया है उसको एलिमिनेट। तो व्हाट इज़ द रिपीटेटिव टास्क वी डिड कि हमने सारे पेयर्स को फॉर्म किए थे, इसने इसके हमने यहाँ पे एक स्मार्ट टेक्निक यूज़ करनी है। एंड व्हाट वी विल डू फॉर दैट थिंग इज दैट वी विल फॉर्म द इक्वालिटी, विल चेक द इनइक्वालिटी। तो हम क्या इक्वल करना चाह रहे थे, S1 माइनस ए ऑफ आई प्लस बी जे, राइट?
हम इसको इक्वल करना चाह रहे थे अपने S2 माइनस ए ऑफ प्लस ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ, राइट। अगर हम ए ऑफ वाई को एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दें और बी ऑफ जे को वाई से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई। हाँ, दिस इज नथिंग बट एस वन माइनस, so this is nothing but s1 minus x plus y and s2 plus x minus y। अगर हम LHS और HS को वापस से अगर एक साइड करें, सम को एक साइड और बाकी वेरिएबल्स को एक साइड, तो वी विल गेट x minus y plus nothing but s1 minus s2 by 2, राइट। यही होगा। तो हमें यही चेक करना होगा कि सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि S1 माइनस S2 जो है वो एक इवन नंबर होना चाहिए, कि हम उससे 2 से डिवाइड करें। अगर ऑड हुआ तो इन दैट केस हम कह देंगे कि वहीं से रिटर्न -1 नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट। एंड वी जस्ट नीड टू चेक कि जैसे हमने पेयर सम किया है, क्वेश्चन पेयर सम किया होगा, हमें यहाँ पे पेयर डिफरेंस बस एक करना है, राइट। पेयर सम का सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच क्या था? पहला तो ब्रूट फोर्स से जो हमने किया था, फॉर्म ऑल पॉसिबल, राइट। मेथड 1 था। मेथड 2 था 2 पॉइंटर अप्रोच, राइट। 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने के लिए हमने तो सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्टिंग की रिक्वायर्ड है, राइट। तो हम वही चेक करेंगे। सेकंड टेस्ट केस को लेते हैं, उसका ड्राइन कर लेते हैं एक बार। सेकंड टेस्ट केस आई कैन सी इज 5 7 4 एंड 6 एंड वी हैव 1 2 and 8, right? So S1 would be nothing but 22 and S2 would be nothing but 8 10 and 14, right? 14, I need to check if S1 minus S2 by 2 ना होता है, right? 22 minus 14 will give you 8, so this is nothing but 4. We'll sort the array 1 and array 2, and what I'll get? I'll get 4 5 and 7. Only in this case the array remains same, that is 1 2 3 and 8, so 1 and 8। हम 2 पॉइंटर यहाँ पे लगाएंगे, i यहाँ पर होगा और j यहाँ पे होगा, एंड वी विल चेक द करंट डिफरेंस। सो 4 minus 1 will give you 3। 3 is lesser than my target। what is my target? Target is 4, so definitely हमें अपने डिफरेंस में जो हमने a माइनस बी किया है, a को बढ़ाना पड़ेगा, तभी डिफरेंस भी बढ़ेगा, राइट। हम क्या करेंगे, अपने आई पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे आगे की तरफ, एंड नाउ 5 minus 4 will give you 5 minus 1 will give you 4, and we have reached a desired output। So this would be a method 2, this would be a method 2। and what would be the time and space? सबसे पहले तो हमने दोनों चीज़ को सॉर्ट किया, राइट। n log n plus m log m would be our sorting, the time required for the sorting। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें पे क्या कर रहे हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज आई गेस कांस्टेंट। सम वन निकालेंगे उसके लिए n चाहिए और सम टू निकालेंगे उसके लिए m चाहिए, तो प्लस n प्लस m। अब देखोगे तो सबसे लार्जर डायगोनिसिटी क्या होगा, n log n plus n log n, so this यार final diagnostic for this approach। and what would be the space? Space would be nothing but O of 1। we are not using any space, right? Okay, तो अब हम एक बार मेथड 2 का भी कोड देख लेते हैं। लेट्स सी, मेथड 2 का कोड वर्क थ्रू देख लेते हैं। अगेन लाइव कोडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर माय सेइंग। So first we have calculated the sum of all the elements in array A, then we have calculated the sum of all elements in array B। हम check कर रहे हैं कि if sum minus S2 dot, then definitely at that point of time no such possible pair is my potential answer, and in that case I'll just say return minus। Then as the next course of action, we are sorting both the arrays, and we are actually now storing the target, or let's say we are storing it at temp S1 minus S2 by 2, right? Now, for the next course of action, definitely we need both of arrays in the sorted form so that we can apply a two pointer technique. So I equals to 0 and j equals to 0. And we are going, the current difference, if it is lesser than target, definitely I plus plus, else j plus plus. And if it matches the target, then return 1, else return -1, right? That would be your entire code. And that would be it. So let us hit the submit button. Now, we see the constraint. If we see the constraint, it is 10 power 6, right? So 10 power 6 log of 10 power 6 into 2. Uh, then 10 power 6 log of 10 power 6 पूरे का into 2, right? Because we are using it 2 times. So definitely that time velocity would be less than 10 power 8. And if we are using 10 power less than 10 power 8 iterations, तो हमारा कोड सबमिट होना चाहिए जैसे कि हो गया सब, right? Okay, so let us see the method 3, or let's say the last method or the optimized method. A bit more observation is required, but yeah, let us see that as well. So we'll go for method 3 now. So it will again, we will derive it from our previous techniques. So previously we saw that we have the inequality like this, that x minus y is nothing but s1 minus s2 by 2, right? We have that. So x minus y nothing but s1 माइनस एस टू बाई टू, राइट। और एक्स से क्या क्या डोनेट करता था, एक्स जो है वो ए एरो को डोनेट करता है और वाई जो है बी को डोनेट। हम यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, डोनेट ए दिस डोनेट्स बी, राइट। तो क्या हम अगेन एल एच एस आर एच एस को करेंगे, वी ऑलरेडी नो दिस इज अ कॉन्स्टेंट, राइट।
can I say that S1 minus S2 by 2 plus Y, and Y is nothing but the B array, and this X is nothing but the all the possible elements present in array A. तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि फॉर ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे एक्स, क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? या फिर या फिर मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूँ कि फॉर ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन एरे बी, इफ आई, बिकॉज आई नो एस वन माइनस एस टू इज अ कॉन्स्टेंट, राइट? तो मैं क्या करूँगा कि एक फॉर लूप यूज़ कर लूँगा, मैं फॉर लूप यूज़ कर लूँगा दैट इज फॉर आई इक्वल्स टू जीरो टिल आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस, राइट? एंड दिस वाई इज नथिंग बट नाउ माई बी ऑफ आई, right? And can I say that my need is nothing but b of I plus s1 minus s2 by 2? B of I मिल गया, s1 minus s2 will get that using a for loop, right? If I get my need, हमें बस चेक करना है कि क्या ये need is this particular need present in my array A or not, बस ये मैं चेक करना है. So what is the best data structure, the best way to check, or in the least possible time complexity, कि क्या एक element present है in a particular set array or anything, a bunch of collections, let's say, right? सबसे बेस्ट तरीका होता है हैश चैट, राइट? हैश चैट की आप इंटरनल वर्किंग भी ज़रूर से कहीं पढ़ लेना, राइट? मेरे को पता है, बट मैं भी समझाऊंगा ओपन एडिसिंग एंड चेनिंग, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. बट दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरव्यूअर को बहुत अच्छा लगता है यार कि हैश चैट और हैश मैप इनबिल्ट कैसे काम कर रहा है, राइट? इसकी खूबी क्या होती है कि आप सारे एलिमेंट्स इसमें डाल लो, लेट्स से 1 2, और लेट्स से एरे 1 के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? इट वाज 5 7 4 एंड 6. तो सबसे पहले तो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता है और सारे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो पहुंच जाता है. अब मैं इस हैश चैट से पूछूंगा कि डू यू हैव 5, राइट? तो ये ओ ऑफ 1 में मेरे को बता देगा कि येस आई हैव, और ट्रू रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, येस आई हैव इट. बट मैं सुनूंगा अच्छा डू यू हैव 9, राइट? ओ ऑफ 1 में अगेन चेक कर लेगा और ये बोलेगा फॉल्स. तो आप पूछ सकते हो भाई ये ओ ऑफ 1 में कैसे चेक कर रहा है, राइट? क्योंकि हमने अगर एरे ऑफ एलिमेंट से सर्च करना है तो लीनियर सर्च तो ओ ऑफ एन ले ही लेता है. ओ ऑफ 1 में ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे हैश हैश फंक्शंस यूज होते हैं, राइट? हर एक वैल्यू को यूनिकली अपने एक स्पेस में डाला जाता है. और जब भी मैं पूछ रहा हूँ 5, तो एक्चुअली मैं तो पूछ रहा हूँ 5, बट ये क्या करता है इन बैक एंड साइड, इसका एक हैश वैल्यू निकालता है. हैश वैल्यू एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से निकाला जाता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमेशा ओ ऑफ 1 होते हैं, राइट? अगर ये हैश वैल्यू प्रेजेंट है, ये यहाँ पे बोल दो ट्रू एल्स फॉल्स. ठीक है, हम थोड़ा सा वीडियो से आज के क्वेश्चन से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, पर ठीक है, वर्किंग ऑफ हैश में आप जरूर से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो हमें बस ये नीड को चेक करना है, दैट इज इफ इट्स प्रेजेंट इन दी, if it is a part of array A or not. If that is the case, we'll just say return true, else return -1. That would be it. What would be the time and space? Time would be O of n, space would be O of n, because we have used the hash map. ठीक है. इस वीडियो को यहीं पॉज करो. Try to code this approach, the third approach, the optimized approach by yourself, and then we can see the or we can end this video after that. Okay, so we have this third approach as well. Let me comment down the second one, and let us see the third and final approach. Great. So we have again we have calculated the sum, because that is required to find this temp, and temp is nothing but we will use it to find the need, that is s1 minus s2 by 2 plus b of I. And if the need is present in my array A, then definitely return 1, else return -1. That would be it. Yeah. Time and space, O of n as time, O of n as space.